हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। वेलकम टू मोर टॉक्स। और आज मैं जिस ऑफिसर को लेकर आया मोर टॉक्स में, उनकी ज़िंदगी बहुत इंस्पायरिंग रही है। आज मैं बात कर रहा हूँ लेफ्टिनेंट कर्नल मोनीश आहूजा से। एक्स एनडीए, नॉर्मल फौजी परिवार से, केंद्रीय विद्यालय के पढ़े हुए, ज्वाइंट एनडीए इन 1991 एंड अच्छे थे एनडीए में, गुड बास्केटबॉल प्लेयर, फर्स्ट एनक्लोजर क्रॉस कंट्री, joined IMA, very interesting stories of his IMA life, and then joined EME. फादर बिहार रेजिमेंट के थे, इन्होंने ज्वाइन किया EME। EME में आके इन्होंने बहुत अच्छा करियर था इनका। ही वॉज द फर्स्ट ऑफिसर टू डू अ पोस्ट ग्रेजुएट इन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन ट्रॉम्बे। तो वन ऑफ द मोस्ट आउटस्टैंडिंग ऑफिसर्स ऑफ हिज बैच। बट 13.5-14 साल की सर्विस में ही डिसाइडेड टू लीव द आर्मी। उन्होंने आर्मी को छोड़ दिया बिना पेंशन के। बहुत बड़ी रिस्क थी कि आप सब 5-6 साल बच्चे हैं, आप कुछ और साल करके पेंशन ले लो फिर छोड़ दो। बट ही लेफ्ट एट 14 ईयर्स सर्विस एंड देन हिज जर्नी एज एन एंटरप्रेन्योर बिगेन। आज लेफ्टिनेंट कर्नल मोनीश आहूजा runs a company, Prespel, which is almost 1000 crore worth। तो ये बहुत कमाल की बात है कि जो लेसन्स आर्मी में सीखे, एनडीए में सीखे, आईएमए में सीखे, अटैचमेंट में सीखे, फिर ईएमई में सीखे इन्होंने, वो इन्होंने अप्लाई किए कॉर्पोरेट वर्ल्ड के अंदर। सो आई एंजॉय टॉकिंग टू लेफ्टिनेंट कर्नल मोनीश आहूजा, अ वेरी वेरी एंटरप्राइजिंग यंग ऑफिसर हु हैज रियली कार्व्ड अ नीश फॉर हिमसेल्फ। और बहुत कुछ ही दिन पहले उन्होंने जो है पीएमओ में जाके भी अपना बिजनेस मॉडल समझाया है। बहुत अवार्ड ले चुके हैं ये कंपनी के तौर पे भी, और जो है एज ए इंडिविजुअल ऑल्सो। आज 16 स्टेट्स में इनके ऑफिस हैं एंड अफ्रीका में, मिडल ईस्ट में और दुनिया में कई जगह जो है इनका बिजनेस जो है उनका कारोबार चलता है। सो फ्रेंड्स, वॉच दिस इंटरेस्टिंग टॉक विद लेफ्टिनेंट कर्नल मोनीश आहूजा। थैंक यू। जय हिंद। Welcome to this More Talks, and I've specifically got you here to discuss your journey from army to being such a successful entrepreneur and somebody who is a recognized name in renewable energy, in clean energy. Really, hats off to you. So just take us through अपना एनडीए के बताओ, एनडीए कैसे ज्वाइन किया, अपने पेरेंट्स के बारे में, and then we will take it forward from there. Thank you so much, General Yashmore sir, for inviting me. It's really a pleasure to be here. Sir, I am a Fauji kid, army brat. My father was in the infantry Bihar regiment, and जैसे like any other Fauji child, every 1.5, 2 years I've been in a new school. 11वीं 12वीं 11th 12th I did from Kendriya Vidyalaya Bhopal, and that point of time. This was 1991 सर। जैसे हम एग्जाम्स देते हैं कॉम्पिटिटिव, हर जगह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिए, एंड आई गॉट थ्रू टू इंजीनियरिंग, एंड भोपाल में मैंने इंजीनियरिंग ज्वाइन कर ली सर। दैट वाज कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। केवी बैरागढ़, एक केवी बैरागढ़ है, एक नो, केवी भोपाल सर, केवी मैदा मिल भोपाल। सो दैट इज वेयर आई वाज स्टडीइंग, एंड मेरे क्लासमेट्स फॉर्चुनेटली सर वहां पर वर ऑल ब्यूरोक्रेट्स चिल्ड्रन सर। तो मतलब IAS, IPS, IRS, बिकॉज बीइंग द कैपिटल, तो उनका रुझाव पढ़ने की तरफ ज्यादा था सर, बिकॉज यू नो द पेरेंट्स मे बी वर फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। और मी बीइंग आर्मी किड, खेल कूद की तरफ ज्यादा रहता था सर। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल नेशनल्स, एंड यू नो भाग दौड़ ज्यादा। सो इन दिस स्पेस, यस, बिकॉज ऑफ पीयर प्रेशर, और साथ वाले लोग पढ़ते थे तो हम भी पढ़ के वी ऑल्सो मूव फॉरवर्ड सर। And I think in this space I went and gave a NDA exam, clear हो गए sir. Went for SSB, clear हो गए. Went for medicals, got rejected. SSB कहाँ थी आपकी? Where was your SSB? SSB was 19 SSB Allahabad sir. So जिसको लोग रिजेक्शन सेंटर होते हैं वहां पे सेलेक्ट करते हैं। हाँ जी सर, रिजेक्शन सेंटर, रिजेक्शन सेंटर। This was first chance में you cleared your written exam in SSB? Yes sir, first chance cleared written exam SSB. So you're preparing for IIT, preparing for medical. So relatively, India का exam relatively I think
one can clear. So that was not a problem. SSB भी clear हो गया सर, वो कोई problem नहीं था. मेडिकल जब रिजेक्ट हुआ तो एक थोड़ा सा शॉकर आया कि क्या है, कुछ कार्डियक इशू उन्होंने बताया. सो वेंट इन फॉर अपील मेडिकल के क्या है, पेरेंट्स ने भी बोला, गॉट क्लियर्ड विथ मेडिकल. एंड जब इन दिस जर्नी ऑफ 3-4 months जब क्लियर हो गया, then decided that I will go and join NDA. It came as a shocker to my parents. My father specifically is also ex-NDA. तो वो बोले भैया तुम मम्माज बॉय, तुम बच्चे लोग, तुम क्या इंडिया जाओगे, तुम क्या इंडिया करोगे. स्टैंडर्ड सर, जैसे पेरेंट्स वुड टॉक अबाउट देयर किड्स. तो इन दिस जर्नी 16-17 साल की उम्र में सर वी वर ऑल्सो कि हम तो देश कॉन्कर करेंगे. हम बोला नहीं, मैं तो जाऊंगा इंडिया. So with reluctance and perseverance, भेज दिया पेरेंट्स ने सर. And I still recall sir, my father told me, देख बेटा फौजी हूँ, पैसे नहीं है देने के लिए, पहले 15 दिन में अगर वापस आता है तो मुझे पैसे नहीं देने पड़ेंगे. Because so आ जाना पहले 15 दिन में वापस, in that kind of thing. मतलब सर हम भी ईगो में with father बोला वापस नहीं आऊंगा. वो वापस नहीं आऊंगा बोल के गया सर. पहले 15 दिन यही सोचता रहा कि वापस क्यों नहीं जा रहा था. Because life in India is tough, as we know, and things. It's a shock when you kind of. But I think, sir, God is kind. अच्छा हुआ वापस नहीं गया. The kind of journey that India में army, the kind of ruggedness, the kind of friends, the kind of support that system you get for a lifetime. I think everybody should go to India. That's what I would say. We must have a compulsory. मोने इतने बच्चे फिर कई इंडिया खोलनी पड़ेंगी हमें अगर सब बच्चों को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस कराना है तो. Correct. But it brings you like the India, the maker of men. So you actually start looking at life in a young age in a different perspective. So I think. मेरे को ये बताओ आपका which squadron were you in NDA? NDA में आपकी खट्टी मीठी क्या यादें रही? And you must be good in studies, तो आपने तो गोल्ड टॉर्च वगैरह कुछ लिया होगा इंडिया में. What was your performance there? जी सर. So my father was from Juliet Squadron, Juliet 27th course. I went and took a parental claim, so I went to Juliet 87th course. अच्छा, स्क्वाड्रन का भी पेरेंटल क्लेम होता है क्या? हाँ, yes sir. And ये मुझे बाद में पता चला. तो मुझे अल्फा स्क्वाड्रन अलॉट हो गया था. And when I came back and somebody there, and first night without scholar allotment, coincidentally I stayed in Juliet Squadron. तो वहाँ डीसीसी थे, उन्होंने उस टाइम पूछा क्या अलॉट हुआ. मैं बोला अल्फा स्क्वाड्रन. बोला भाई जुलियट क्यों नहीं लिया, तेरा तो पेरेंटल क्लेम है. मैं बोला सर मैंने लिख के दिया था. बोला लिख के दिया था तो मिलना चाहिए. मैं बोला सर नहीं दिया. So he walked me back, sir, from Juliet Squadron. He took me back to Sudan block, and this DCC there now Colonel Satish Kanwar, Juliet 82. So he went and said कि भाई इसने पेरेंटल क्लेम मांगा, आपने इसको क्यों नहीं दिया. And whoever was the clerk there said नहीं ऐसा कुछ लिखा नहीं, इसने कुछ बोला नहीं. So I stood up there. I said नहीं मैंने तो लिखा father is this, और पेरेंटल क्लेम मांगा है. When they checked the records, I had actually done that. So they changed my squadron from Alpha to Juliet and they allotted me Juliet. So I walked back with him. And people told me पागल है Juliet squadron में जा रहा है, मतलब Alpha मिल रहा था, life अच्छी होती. So went to Juliet squadron and I think that was one of the best things that could have happened. Which year was this? कब गए थे आप? So I joined India in December 91, 87th India course. अच्छा, okay. December 1991. Okay. हाँ जी sir. And then 3 years in India, sir. No, आपका second question में I was not a torchy, sir, but I was reasonably okay in academics, good 6-pointer के आसपास. But focus was always, sir, खेल कूद करो, भागो. So I was in academy basketball team, squadron में cross country, first enclosure type. तो और वो आया sir, it was not so. So just another sir like anecdote जो आपने पूछा, जब घर से गया तो looked after child, overweight, पहुंचे सर NDA. When I went back after NDA special में first 5 months के बाद में, my mother saw me at the railway station और रोना ही नहीं रुक पाया उन पर कि मेरा बेटा तो हट्टा कट्टा भेजा था, इसको 5 महीने में क्या हो गया, क्या बना दिया इसका है. हाँ मतलब and you become skin and bones and as it is. So that was in spite of eating so much, in spite of eating so much in NDA, you still become lean and mean, huh? So sir, yes, you become lean, mean, you become what it makes you. And
and you also become more accommodative in life, because for everything, if there is a phase, you go through it. तो वो आज भी मुझे याद है, रेलवे स्टेशन पे मदर रुकी नहीं रोते हुए कि क्या कर दिया तेरे को, मैं बोला ऐसे ही है. But then you start actually eating right, in terms of सब खाओ लेकिन you burn everything out, you do things with your postmate peers, and it's a fantastic phase which I still believe everybody should go through. But that happened, sir, and then I went to IMA again, sir. इंडिया में कोई डिड यू गेट एनी पनिशमेंट एंड ऑल, या कोई ऐसे इंस्ट्रक्टर आपको याद हो मनीष जिन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया हो आपको? मतलब बोथ थिंग्स आई वांट, गुड एंड बैड एक्सपीरियंस, कि कहीं पंगे में पकड़े गए हो या कुछ, मतलब कई बार गलती से भी सजा मिल जाती है, एंड सर दूसरे को इंस्पायरिंग फिगर. सारी चीजें सर. सो it was never that I would say personally I was सीधा लाइन पे चल रहे. नहीं, we would do things where you would get caught, you would get punished, and also the DSs that you have, the divos you have, the squadron commanders you have, you look up to them and you get inspired by them. So a para beret, a parachuter, wings, all these inspire you. So I am in touch with, as most of us would be, with all our squadron commanders, with all the DSs, and they have been, guiding us at that young, impressionable age. So hats off to them, hats off to the system, the way it happens. And there, sir, all my DSs, so, that point of time, Captain Paratkar, Lieutenant N.A.J. Joseph, they are still in touch, sir. They are like, elder brothers, they are like father figures. We still remain in touch. General Karki, sir, aap jante honge, Abhay Singh Karki. So he was also Juliet Squadron. He was our squadron commander, still in touch with him, recently superannuated. And they continue to guide, sir. They continue to be well-wishers. And yes, you take those pangas also, sir. You wear a trouser which you're not supposed to wear because you become a senior. And then un dinon mein again, Juliet Squadron, Captain Vivek Sharma from 16 Jat, he the brigadier now, he used to be a Divo. तो एक एस्पिरेशन के 6 टर्म में आप जाके फ्लैंक में रहोगे. दैट टाइम कैप्टन विवेक शर्मा इंश्योर्ड कि मैं कॉरिडोर में रहूं, तो मुझे फ्लैंक मिला ही नहीं सर 6 टर्म. so these are things which you remember, but fantastic phase, sir. So also, sir, I played academy team right from the beginning. So since academy team में था, sir, you get certain privileges. आप भाग दौड़ में अच्छे थे तो स्क्वाड्रन में कुछ प्रिविलेजेस मिल जाती है. So those are all fantastic memories that you carry, that you can push the human mind, the human body to achieve things which we don't think we'll be able to achieve. And because of the team spirit or the environment, क्या affect करता है वहाँ पे? दोनों चीजें सर. Team spirit भी, because you are in a group, environment, guidance from both the seniors in the squadron or externally, and also you also now start seeing that the juniors are looking up to you. So you need to be a right example for them also. So the built up of the environment is such that it propels you towards performance, and not necessary that you have to perform in all fields. मतलब जरूरी नहीं है, अगर कोई टॉर्ची है, पढ़ रहा है, उसने अपने लिए एक जगह वहां बना ली, दे आर क्रेडिटेड फॉर दैट. कोई भागने खेल कूदने में अच्छा है, दे आर क्रेडिटेड फॉर दैट. ऐसे भी केसेस है सर जो लेट्स से मकरा और डिफॉल्टर ही है, तो वो उसमें भी वो एक्सेल करता है कि भाई. so with all types make this world, right, sir? So you need all types of people. So I think that combination, that everybody is there, everybody is together, किसी की जो अच्छाई है उसको बढ़ाना है. You have to cover for individual faults, and we all have our goods and bads. So I think that collectiveness is what India teaches you, and it still remains. So I think nothing can be better than that. And फिर IMA पहुंचे आप 93 में? सर नहीं सर, December 91 इंडिया ज्वाइन किया, December 94 पास आउट हुआ सर, 3 साल. Then सर coincidentally another incident, जब एनडीए से पास आउट हुआ तो मूवमेंट ऑर्डर लेने गया IMA का. तो मूवमेंट ऑर्डर में एक डेट लिख के मुझे मूवमेंट ऑर्डर दे दिया गया. एंड दैट टाइम कैप्टन पराटकर गेव इट टू मी. ही वाज द डिवो आल्सो. वो बास्केटबॉल के OIC भी थे, तो उन्होंने दे दिया. बाहर आया
तो कोस्टमेट से इस तारीख को मिलेंगे। तो बोला यार तू इस तारीख को क्यों मिलेगा? और मेरी डेट जो मेरे मूवमेंट ऑर्डर में लिखी थी वो शायद 3 या 4 जनवरी लिखी थी रिपोर्टिंग की इन 95। एंड इनकी डेट लिखी थी कुछ 10 या 11। तो मैं बोला यार ये प्रिंटिंग मतलब मेरे में कुछ गलत लिख दिया। मैं वापस गया, मैं बोला सर रिपोर्टिंग आईएमए की 10 जनवरी है, आपने मेरे में 3 लिख दिया, एक करेक्ट करके दे दो। तो बोला भैया तेरी रिपोर्टिंग 3 की है। हाँ मैं बोला सर मैंने कौन से पाप किए कि मैं 7 दिन छुट्टी के मतलब कम हाँ हो हाँ हाँ सर छुट्टी हाँ तो। बोला नहीं, आईएमए बास्केटबॉल टीम का तेरा प्री सिलेक्शन है तो क्वाड्रेंगुलर आ रहे हैं, तो आईएमए बास्केटबॉल टीम ने रिक्वेजिशन किया तो तेरे को 3 तारीख को पहुंचे। सर आई वेंट टू द टेंजेंट कि सर मुझे बास्केटबॉल खेलना ही नहीं है, 7 दिन छुट्टी नहीं छोड़ सकता। हाँ, सही बट बात है। बट हाँ बट फौज का ऑर्डर है सर, मूवमेंट ऑर्डर था। सो आई वाज द पर्सन हु रीच द फर्स्ट पर्सन फ्रॉम माय बैच टू रिपोर्ट इन आईएमए, माय गॉड। बिकॉज हाँ, अब मेरे जस्ट फॉर साथ एक दो और। बास्केटबॉल। हाँ, हाँ जस्ट फॉर बास्केटबॉल सर कि आईएमए बात। और मैं पहले दिन रिपोर्ट किया तो आईएमए बास्केटबॉल टीम की प्रैक्टिस में लग गया सर। एंड ठीक है सर, लग गए। जनवरी के महीने में देहरादून की सर्दी, नॉट नोइंग वेयर अबाउट्स, और सीनियर्स थे बास्केटबॉल टीम वाले, वो भी कुछ एनडीए वाले थे, तो दोस्त यार पहले के ही थे सर। तो एक दिन हल्की हल्की बारिश हो रही थी एंड दीज मैंने बोला सर बास्केटबॉल के लिए जाना है चलो। बोले यार बारिश हो रही है, मैंने हो रही है। बोला बास्केटबॉल नहीं होगा, सो जाओ। अब सर उठ गए थे। सो दे सेड बारिश बंद होगी तो बता देना। थोड़ी देर में बारिश रुक गई सर एंड आई टोल्ड देम बारिश बंद हो गई है चलो। सो दे गॉट रेडी इन देयर पेस और हम बास्केटबॉल के लिए पहुंच गए सर। इस दौरान पे द कमांडेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जनरल इंदर वर्मा was already standing with his dog in the basketball court. अच्छा। अब हम लेट थे सर, बिकॉज वी वर लेट, देयर वाज अ टाइम एंड वी वर नॉट देयर। बारिश हो रही थी। आई आस्क्ड देम, they said, so what happened was before the academy started, और ये अपॉइंटमेंट्स थे सर, कोई जेईओ था, कोई एससीओ था, हाँ कोई बीसीए बीओ पे था, और मैं तो नॉर्मल जीसी कैडेट पहुंचा ही था। Before academy started, all of them were D-tabbed and D-striped because they were late. हाँ। And since I was a GC equivalency, I got 28 days restriction before even first reporting of academy happened. दिस वाज द यूनिक। हाँ मतलब सर इट वाज, मैं बोले एक तो 7 दिन पहले आया, हाँ और मतलब और मैं तैयार था, मैं हाँ खुद चले जाता, कलेक्टिव हाँ स्पिरिट में सीनियर्स के लिए वेट किया, हाँ। एंड इन एब्सेंशिया मार्चअप भी नहीं हुआ, 28 डेज रिस्ट्रिक्शन मिल गई। Very good. हाँ So, sir, and obviously, sir, academy team maybe. So, before the academy started, I was thrown out from the IMA academy team. The first day of academy, I was on restriction. I was the only GC on restriction second termer. And 7 दिन छुट्टी भी पहले. अब मेरा My God. course, and so it was so unique that there were 2 drill ustads and they said ये सबसे मकरा कैडेट है, अभी एनडीए से आया है, पहले दिन. So, like it is, sir, on Brill Square, 2 ustads with 1 GC only. So that was my start of IMA, sir. And, you know, I had to go through the restriction. But after 14 restrictions, my company commander, and they took up the case. This is such and such. And then at 14, it was stopped. But first 14 days of official IMA, I was on restriction. My God. और तब कहाँ होती थी रेस्ट्रिक्शन? वो चैटवुड में या उधर स्विमिंग पूल के पास? स्विमिंग पूल के पास सर, मतलब हाँ वो जो छोटा ड्रिल स्क्वायर है वो। हाँ जी सर, हाँ जी हाँ नियर भगत बटालियन। करेक्ट सर। सो यू नो things happen sir without intent, also without any intention of doing wrong also, but that's how the system is. So मतलब I kind of went to my company command, I said sir 28 days restriction नहीं भी होगा तो मैं relegate पक्का हो जाऊंगा, because you know you cross the threshold. So and others got D-tabbed, D-striped or whatever. So I said look at it in a different way, and they did. So that is how my journey started in IMS. And then I did everything, sir, right from, you know, everything. In terms of sports side, I was very fortunate, I excelled. Really? On the academic side, it worked well, sir. There was no problem. मतलब हर चीज टाइम पे पास हो जाते थे, कोई इशू नहीं था. So it was good from that perspective. And then many things which we learned continued in IMA as well, sir. So IMA then gives you a
more better perspective about the military life than what maybe NDA gives, and that worked well, sir. तो So I IMA passed out में, as a JEO, sir. yeah, you were a JU. Oh, very good. I passed out as a JEO. And you passed out in December 95. Yes, sir. December 95 got commissioned, sir. And So, what did you choose, or you went to EME? sir, again, my father, since he was from infantry, so काफी blackmail किया, sir, emotional blackmail किया कि infantry की life tough होती है. मैं बोला, I am cut out for this. So, I actually wanted to go to para, sir. That was my choice. And in IMA also, I was in my course running for the paramedal, sir. Oh, great. In the sense, that's very creditable, yeah. It was amongst two of us. Since I chose EME, and that's how the way of life, I was not given the paramedal. So, and just for the young children who will watch this interview, what does paramedal involve? उसमें obstacle. So, sir, it is a क्या होता है paramedal, and why it is so prestigious? Sir, it is a medal given in IMA. It is one medal in a course, which is given to the overall individual to be the most physically fit. Most physically fit cadet of that batch. And it not only, just physically fit, but it encompasses overall participation in sports, games, swimming, riding, cross country, obstacle course, etc. So you must be, drill. I was K Nodley. I was Nishan Toli. I used to carry the Nishan, sir. So overall, on the physical side, and everything has a point system. So you must be in the top 3-4 to be running for the paramedic. And in that, I was, then at that point of time, you also know, so you start calculating कि मेरे कितने number किसके हैं, everything. But you are expected to make some choices. And, typically you would give a paramedal to somebody who's made a choice for an infantry or a fighting arm. You don't, and rightfully so. You don't want to make a precedence that somebody who's opted, let's say, for a service arm should get a paramedic. It would be a kind of a wrong messaging. So I didn't get the paramedic, sir, in the sense, despite whatever performance said. उस time पे लगता था कि यार ऐसा क्यों? But now in hindsight, with age, maturity, you understand those are right decisions. So physically was quite, there in terms of games, sports, and doing things. And as I said, sir, I was the stick oddly, table oddly, Nishan Toli. So I did all of that right through my NDA and IMA, sir. Great. And then my father requested me, sir. He made a request that I said, मैं casualty हो जाऊंगा. So casualty is you opt for something, you don't get it. I said, profile के साथ ही casualty हो जाऊंगा. So he said, बेटा तू एक मेरी request है, तू EME signals engineers opt कर ले, which is a technical side of the army, and फिर casualty हो जाता तेरी किस्मत. So I agreed, sir. So I for once I heard my father out and I said, ठीक है. So I gave EME signals engineers in that order as my choice. And I was called by the battalion commander, I was called by my company commander, and I was told that you will become a casualty, इसको आप change कर लो. And Colonel Shergill थे मेरे battalion commander from President's house, and he said, मेरी battalion है ले ले. Or मतलब you will get it. And I used to play polo as well, sir, riding polo. So I played. I'm a gold medalist. I am in riding in polo from my battalion. So I used to. So then finally I said, sir, I am very happy कि आप मुझे ये दिला दो. But I have made a commitment to my father that I will fill technical arms. So I will not change this. But I am very happy to be a casualty. So as luck would have it, sir, I got EME. And I got commissioned in my attachment to Suraj Gurkha 5 Jackrip, and I went to Nagaland. I served 1 year on attachment with 5 Jackrip. Again, sir, fantastic tenure. That time, the Corps Commander General Sarabjit Singh Grewal, retired as AG, was the first commissioned officer of 5 Jackrip. Again, the unit, told me that. Change, and मैंने application भर दिया change करके. अच्छा.
I won't take the name now. One senior company commander called me and he said, "यार देख तूने ये किया है. There can be nothing better than this for the unit, well done for you, me. But मेरी उम्र देख और तू भी वही पहाड़ चढ़ता है, मैं भी यही पहाड़ चढ़ता हूँ. And for whatever it is, you have got EME. You are going into a technical side. So think over it. And as an elder brother, I'm telling you, a unit is good. I am good. We are all good. But इस उम्र में आज जब मैं ये कर रहा हूँ, तू भी यही करता रहेगा जिंदगी भर. So take a call, whatever you want to do. And I think he kind of again gave me that impression. Reinforce this key, go where your destiny. Maybe what my father said. Yeah, where your destiny. Don't try and fight your destiny. Don't try and do things. जो चल रहा है अच्छा है. So then I went to my CEO and I told him, sir, मैंने application डाला था, मत आगे भेजना, वापस दे दो. And they did, sir. So I then joined the EME. I joined EME. My first CEO was from Para EME. Okay. And पहले दिन बोला बटालियन में क्रॉस कंट्री भागना है. क्रॉस कंट्री भागे सर. ऑल माय लाइफ आई वाज रनिंग. फर्स्ट आ गए तो बोला पैरा ईएमई में जाएगा. मैंने पैरा ईएमई भर दिया सर. एंड आई वाज स्लेटेड. सीईओ का रिकमेंडेशन ये तो दिमाग में भी था कि पैरा जाना है तो ये फिक्स हो गया. एंड आगरा चले जाएंगे. सो आई वेंट फॉर वायोज सर. एंड वायोज में आई हैड अ बास्केटबॉल रिलेटेड स्पोर्ट्स इंजरी. एंड दैट स्पोर्ट्स इंजरी, अब 20 साल बास्केटबॉल खेला सर. स्कूल खेला, एनडीए, मतलब. So my knees kind of gave way, and that sports injury resulted in me getting medically downgraded. Ultimately, I had to get knee surgery done. And what age? That must be very young age. Sir, must be about 23, 24. So 23-24 साल की उम्र. I have been very injury prone. मैंने अभी बास्केटबॉल, हैंडबॉल तो सर्विसेज तक खेली और चोट से डर, मतलब लगती थी चोट, क्योंकि उस एज में ना हम निर्भीक होके खेलते हैं, है ना. फिर अब चिंता नहीं करते कि I understand. Absolutely, sir. So injuries happen, sir. Sports injuries happen. In my case, it was final खेल रहा था सर, तो वहां पर लग गई. And I got downgraded medically. And thus again things happen, sir. मैं वो पैरा ईएमई प्रोबेशन के लिए नहीं जा पाया क्योंकि मैं मेडिकली डाउनग्रेडेड था. मेरा प्रोबेशन का कॉल भी आया हुआ था, बट मैं जा ही नहीं पाया बिकॉज आई वाज मेडिकली डाउनग्रेडेड. एंड then it kind of dawned upon me that everything is not only about running in sports. Courses भी करने पड़ेंगे, पढ़ना भी पड़ेगा. So slight kind of setback happened, and I was withdrawn from Vios because medically downgrade हो गया. And मुझे Vios दोबारा करना पड़ा सर with a junior course at a later point of time. So then a shift happened कि यार पढ़ना भी पड़ेगा. केवल खेल कूद से काम नहीं चलेगा. भागने दौड़ने से बात नहीं बनेगी. हाँ. Now you have to get serious. पढ़ना पड़ेगा. So then I think a new phase started where one started looking at academics as well, with much more seriousness than till that point of time that I was doing. And reasonably okay, sir. Good 75-80% अच्छे grades आ जाते थे. Alpha Delta में रहते थे. So that also went through. And then my journey of a EME career kind of started, sir. And I was fortunate. Did your degree? आपने degree किया? Yes, sir. I did a degree in mechanical engineering. And then in my academic pursuits, sir, I had to make a choice between staff college and post-graduation, MTech. And I made a choice to appear for postgraduate exam and things. And it's again a coincidence, sir. I'm the first EME officer in history of EME to do a postgraduate in nuclear technology from Bhabha Atomic Research Center. Yeah, very interesting. I wanted to know this. This is ये बहुत बड़ी achievement है कि Bhabha Atomic Research Center में आपने जाके you did your MTech there. जी sir. So when I applied for this PG course, sir, and we went through all our. So I had applied for PG in mechanical engineering. And I went for an interview to Indian Institute of Science, Bangalore. And we were about 8 of us for 4 vacancies. हर vacancy में 2 भेजते हैं interview के लिए. In that, there were 2 vacancies in mechanical, and I was number 2, sir. So I had cleared the interview.
and rightfully I would have gone to Indian Institute of Science, Bangalore, to do my post graduation in mechanical. Coincidentally, whatever happened, sir, Indian Institute of Science, instead of 2 vacancies, finally allotted only 1. Okay. So instead of actually being selected, I became the first reserve. And I had cleared the interview. So, we were sent for every interview all over India. There were 2 officers sent for each position. In this case, we were 4 sent for 2 positions. But finally, it was only 1 position which was allotted. So whoever was first, he cleared and I became the reserve. And I kind of took up a case. I said, this is not right, because had you sent me anywhere else, or I've gone to some IIT and all. No, wherever, sir. So they kind of maybe took cognizance of it, MT Directorate, and they gave me a second interview, sir. And this was in BARC, Baba Atomic Research Center. And this was the phase that India had gone nuclear, and now there was a requirement for the officer cadre to get officially or formally trained in nuclear technology. So until then, it was only the Navy which used to actually go for this training, sir, because of their ATV project. So I went for the interview, sir. I got a call. BARC में गया sir interview के लिए, and sir, I think जितने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कोई तारों में देख सकता है, मैंने इंटरव्यू में वो देख लिए सर. इन द सेंस देयर वर 10 मेंबर पैनल ऑन इंटरव्यू. मेरे से पहले जो अफसर गए थे इंटरव्यू के लिए, ही केम आउट आफ्टर 1.5 आवर, और मैं पूछा जाने में कैसा था, बोला बहुत अच्छा था. बोला वेरी गुड सर. मैं अंदर गया सर, मेरे से पहले इंटरव्यू वाले ने एक सवाल पूछा, आई कुड नॉट आंसर. दूसरे ने पूछा, आई कुड नॉट आंसर. और ये जर्नी 10:30 का चला, मैं एक सवाल का भी जवाब नहीं दे पाया. आई जस्ट डिड नॉट नो सर. मुझे मालूम ही नहीं था कि वो क्या पूछ रहे हैं, और नॉलेज ही नहीं थी. एंड सर इट्स वेरी डिफिकल्ट. मैं तैयारी करके गया था, सब गया था, बट द लेवल वाज सो हाई. एंड उधर एक नेवी के रेप थे, उन्होंने बोला ओके यू कैन लीव. तो मैं उठने लगा सर, इतने में किसी ने एक व्हाइट पेपर पे वहां पर एक लॉग का एक मैथ्स का सम लिख दिया. तो एक ने बोला गो, एक ने सम लिख दिया. मैं बोला वो सम देखा, मैंने सॉल्व कर दिया, हो गया सॉल्व. अच्छा. सो ही गेव मी अ सेकंड वन व्हिच वाज स्लाइटली मोर डिफिकल्ट. मैंने वो भी सॉल्व कर दिया. उसने तीसरा दिया सर, अगेन मे बी मोर डिफिकल्ट. मैंने वो भी पेपर पे सॉल्व कर दिया. And in a situation where I was told to go out of the interview, my interview continued for 2 hours. My God. So in a sense, I was virtually rejected, but it has started coming back. So you bounced back from almost, मतलब धराशायी थे तुम. हाँ, मतलब उसने बोल दिया था चले जाओ, इंटरव्यू खत्म है. And again, in some cases, I could not answer. But 2 घंटा मेरा इंटरव्यू चला. And then finally, one of them asked me, what if you get selected? पढ़ लोगे? मैं बोला सर आज तक हर चीज करते हैं, अभी यहाँ पर भी आपने जाने को बोला था, मतलब 2 घंटे हो गए हैं. If I get selected, good sir. If I don't get selected, at least I know where I stand in terms of interview में तो आया, रिजर्व तो होऊंगा. And I was fortunate sir, I got selected. So कितनी सर्विस थी जब आपकी, मोनिश? How you had what, 8-9 years service? Yes sir. So I was a major, sir. I had about 8-9 years of service. That's right, sir. And 2004 to 2006, I did this MTech in BRC as a regular. You stayed there in the campus? You stayed in the campus? Yes, sir. I stayed in Anushakti Nagar in Trombay campus. Me and my wife were there, sir. I got married in 2002. So it was, but it was a complete different perspective of learning. वहां सब इंडिया के ऑल ओवर द साइंटिफिक ब्रेन्स कम, देयर सिलेक्शन प्रोसेस, एंड बहुत मेहनत करनी पड़ी सर. पहले 6 महीने तो लिटरली सर दिन में तारे दिखते थे, बिकॉज द इंटेलेक्ट लेवल ऑफ जो क्लासमेट्स थे या पियर्स थे who have come through a process of GMAT and from all over India, उनका इंटेलेक्ट लेवल, और हम सर फौजी सर्विस करके आ रहे हैं, रिगमोरल ऑफ फौज, और आपके पास ये रशियन बुक्स और ये सारी चीजें समझ में नहीं आता.
But again, sir, no, you have that competitive spirit because of your वो Indian कैसे training, your आपको, army दे training. मस्ट बी लुकिंग अप टू यू कि यार ये आर्मी ऑफिसर्स हैं, एनडीए से हैं, ये सब? Yes, sir. Age profile maybe you are elder to them, 7-8 साल elder, and they look up to you in terms of a uniform person. But you feel weak because in a intellectual knowledge and in the academic knowledge, they are much ahead than you, and you have to catch up. So we caught up, sir. We were a group of Army, Navy, Air Force officers. मेहनत का कोई सबसे then you know, because फौज में भी you give so many exams and things. Then it reached a stage wherein at one point of time certain subjects, I think again I must be one of the few, sir, I got 100 out of 100 Oh, in fine. DRC, sir. And these were subjects on nuclear safety. These were subjects on long term This reminds me of Sunil Prem, whom I interviewed, like you, I'm interviewing him, who went to IIT and stopped there, यार. वहां पे सबके तोते उड़ा दिए. So I didn't top, sir, but yes, some subjects I did top. And but ये recognition तो हुई ना यार, ये आर्मी ऑफिसर है यार, गधे नहीं है सारे. बिल्कुल बिल्कुल sir, बिल्कुल. And did some fantastic projects there. Made some friends for life in the scientific community. And then after that 2 years, I got posted also for a particular project in Delhi after that. So I was very fortunate, sir. फौज में मतलब बॉम्बे देख लिया मैंने, उसके बाद में दिल्ली पोस्टिंग आ गई. तो मतलब very few kind of would be that fortunate. तो यहाँ ना हमारा एक कनेक्ट है. तुमने तो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी पढ़ी है, बट मैंने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को यूज कैसे करना है वो पढ़ा है. तो मेरा आई डिड माय एमफिल एंड पीएचडी इन न्यूक्लियर डेटरेंस एंड न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फ्रॉम ओस्मानिया यूनिवर्सिटी. फैंटास्टिक सर, फैंटास्टिक सर. तो और तुम तो पढ़ाई में शुरू से अच्छे थे. इन माय केस आई एम एन आर्ट्स ग्रेजुएट एंड देन फौज में आके एमएससी वगैरह ये सब किया. तो वेयर आई स्टार्टेड एट से 50% 10th 12th में मेरे नंबर थे. आई वाज सेकंड डिविजनर ऑलवेज. आई फिनिश्ड माय पीएचडी विद 90% स्कोर. Wow, sir. And sir, that's why, sir, you are the inspiration for lakhs of young students, and which I follow also. That is how it is, so sir. मतलब improvement का तो कोई आपने जो कहा ना, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, जी है ना? कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है. एट एनी टाइम हम पोटेंशियल ही नहीं अपने ब्रेन का जानते हम क्या कर सकते. Absolutely, sir. Absolutely. And I think we learn that, sir. Through our journey, we keep learning and progressing on that. और वो चीज कभी भी रुकनी नहीं चाहिए, sir. That's my belief. वो कभी because at every day there will be failure, sir. There has to be failure. Yeah, but there will be. How you bounce back from the failure is more important. I agree with you. Bouncing back is very important. Every time you'll not get success. तो ये बताओ मोनिश, उसके बाद आपने फौज कब छोड़ी, and why did you leave the army? At what stage did you leave the army? So, sir, I got posted in Delhi, and I did few critical appointments in Delhi. I also, because of my backdrop, I did certain social appointments also in Delhi in the army. I was mess secretary of station EME mess. I did material control officer in terms of purchases, and I did, despite not having done a vehicle course, because मैंने MTech किया था तो 2 साल का ban होता है. I was fortunate to make and get involved in the overall scales of T-72 revision, T-90 revision, HVF के साथ में वो सारी चीजें मुझे opportunity मिली. मैंने उसमें काफी काम किया. And in all this journey, sir, I reached a point where I had one chance to give for staff college. And since age was on my side, it was one chance to give. And then if I would have given that and cleared that, then you become a double barrel. In the sense, बहुत कम होते हैं जो MTech and staff college दोनों कर पाते हैं because of age and profile. So I was there, and another coursemate, both of us had this chance of being a double barrel. And in our conversations, बोला यार एक staff college देना है और पास हो गए तो मतलब staff college कर लेंगे. And we were pretty reasonably confident कि पढ़ लेंगे तो पास हो जाएंगे, क्योंकि अभी तक इतने MTech उसने IIT में किया, मैंने तो मतलब एग्जाम कैसे देना है, पढ़ना कैसे है, समझ में आ गया था. एंड इन दिस जर्नी सारी किताबें इकट्ठी कर ली सर, USI के कोर्सेज ले लिए,
मतलब हिस्ट्री बुक्स ले ली, सब शुरू हो गया. बट कहीं ना कहीं आई केप्ट थिंकिंग के what is it that I want to do in life, and would I continue to be in this race of major to lieutenant colonel to colonel, colonel to brigadier general, and what would be my satisfaction level there? And I think in this cusp, I one day spoke to my wife, and she is not from a Fauji background. I said, अगर मैंने ये एग्जाम दे दिया तो आई एम रीजनेबली कॉन्फिडेंट कि मैं क्लियर भी कर लूंगा, बट और अगर ये हो गया इवेंट, देन कहीं नहीं जा रहा मैं, फिर तो मतलब then you are fighting. Then you are a career Fauji, you are fighting this race. But at some point of time, the career Fauji will cease at, as we say, sir, at your level of incompetence, because you'll rise till that level. तो कर्नल हो गए, ब्रिगेडियर हो गए, जनरल हो गए, बट उसके बाद में क्या? और वो चीज एक मेरे दिमाग में हरदम रही कि यार इसके बाद में और क्या. सो स्पोर्ट्स मेरा खत्म हो गया, एक एकेडमिक साइड में मैं आ गया, तो मैं क्या यही करता रहूंगा? एंड दैट्स वेयर अपॉर्चुनिटी नॉक्ड, सर. माय लेट अंकल मिस्टर विनी आहूजा, मेरे फादर के एल्डर ब्रदर, ही बॉम्बे बेस्ड थे. वो मेरे पीछे पड़े रहे सर काफी देर तक, ऑलमोस्ट अबाउट 3-4 साल, के फौज छोड़ दे, मेरे को आके ज्वाइन कर ले, देयर इज सो मच टू डू, पढ़ा लिखा है, ये है सब. एंड आई यूज्ड टू से नहीं, फौज में सब अच्छा है, क्यों करूँ आपको ज्वाइन? बट आई थिंक आई मेड अ डिसीजन दैट आई विल नॉट गिव स्टाफ कॉलेज एग्जाम, और मैंने नहीं दिया. ये कौन से साल की बात है? ये कौन से साल की बात है? दिस इज इन 2007-8. Okay. So after my 2-year ban, so 2006 में I passed MTech, sir. 2008 तक मेरा बैन था, एंड 2008-9 का चांस मैं दे सकता था. अगर तुम आते तो मैं तुम्हारा वहां DS होता. सर, लाइफ टेक्स यू जर्नी. सो मैंने आफ्टर डूइंग एवरीथिंग, सारी किताबें सब लेके, मैंने किताबें सारी पैक करके कार्टन में किसी को दे दी. मैं बोला ये ले पढ़. एंड आई डिडंट गिव स्टाफ कॉलेज एग्जाम, मैंने नहीं दिया. माय कोर्समेट्स एंड दिस अदर कोर्समेट हु आई मेंशन्ड, ही इज अ डबल बैरल, मेरे से सब बहुत नाराज हुए. मतलब क्या कर रहा है, मतलब ऐसे नहीं देना, मैंने डिसाइड कर लिया नहीं दूंगा. वी विल सी वेयर कैरियर टेक्स अस. So that was one turning point, sir. And since I didn't give that, now I was more attuned towards कि मैं और क्या कर सकता हूँ. या मैं टेक साइड में लेट्स से डॉक्टरेट करूँ या कुछ करूँ, या मैं बाहर आ जाऊँ. एंड विदाउट अ पेंशन, again I went back to my wife and I said, see, मैंने ये डिसीजन लिया, you supported, अब मैं छोड़ना चाहता हूँ. And she said, whatever you want to do, your career, I am with you. So she was very supportive. By that time we had our baby girl as well, sir. तो वो 2-2.5 साल की थी. And ये कॉल जब ले लिया सर, then I put up my papers and I went, since I was in Delhi, उस टाइम हमारे DGME थे, मैं सीधा उनके पास गया. एंड आई वेंट टू हिम एंड आई सेड, सर मैं पेपर पुट अप करना चाहता हूँ. और मैं उनके पास शायद उनके ऑफिस में hundreds of times गया हूँगा सर. विथ ऑल रिगार्ड टू हिम, इन दोज hundreds of time उन्होंने मुझे कभी भी बैठने को नहीं बोला. अच्छा. काम की बात, ऑफिस में काम की बात, सल्यूट, आउट सर. जब मैंने उनको जाके ये बोला कि सर मैं पेपर पुट अप करना चाहता हूँ, उन्होंने चश्मा उतारा, मेरे को बोला सिट डाउन. पहली बार इसलिए मामला गड़बड़ है. बोला यार ये मतलब. एंड ऑन सोशली ऑल्सो सर, मतलब विद DGME आई वाज वेरी वेरी काइंड ऑफ क्लोज विद द फैमिली. तो उनके घर जाता था, वहां सोशली इट वाज अ डिफरेंट कनेक्ट. आप वहां कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी, बट ऑफिस में ही वाज एब्सोल्युटली फॉर्मल टू द टी. कौन थे ये DGME? जनरल अजय चंडेले सर. So he was absolutely formal, 5 seconds decision and yes, no. तब मोनीश मैक्सिमम ऐसे ही थे कि CO थे तो इतने सख्त, या ब्रिगेड कमांडर एंड ऑल ना, मतलब ऑफिस में अलग अलग बंदा था, और स्पोर्ट्स ग्राउंड पे पार्टी में कहीं और मिल गया तो बहुत ही. करेक्ट सर. सो सर, मतलब आई एम सेम टू दैट इफेक्ट कि सुबह गाली खाते थे, शाम को उनके घर जाते थे, उनकी विस्की में अपना गम उतार लेते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी. सो ये दिन में लड़ाई झगड़ा करो, गाली गलौज करो, और शाम को उन्हीं की ड्रिंक पियो. नहीं मतलब एज ए जूनियर ऑफिसर आप वो कर नहीं सकते सर, तो आप सुन सकते हो वन साइड, बट शाम को जाओ तो आप ओनली
हमारे क्या होता था यूनिट में, एज ए कंपनी कमांडर, कई बार CO2IC से लड़ाई हो जाती थी कंपनी मामलों में, इंटर कंपनी को ले, बच्चों वाली बातें, आपने ये कर दिया, वो कर दिया, ये वो, खैर एक एक स्टेज तक ही होती थी, फिर बोलते गेट आउट फ्रॉम हियर, तो गेट आउट हो गए, फिर शाम को बुला लेते थे। हाँ जी सर. So likewise. So when I told him, so he said sit down, and then he said, so what are you saying? तूने रति से बात किया? मैं बोला हाँ सर, मैंने रति से बात कर लिया. That's my wife's name, and she is agreeable. He's saying यार तुम ऐसे बात करते हो, agreeable, कैरियर इतना अच्छा चल रहा है, ये चल रहा है, everything, मतलब why are you doing this? I said no sir, I have decided. And then he said your parents. मैंने कहा सर, my mother has been supportive. मैंने उनसे पूछा, उन्होंने बोला जो करना है कर बेटा. फादर, मैं बोला सर जितनी गालियां दे सकते हैं दे दी, कि 13 साढ़े 13 साल तेरी सर्विस हो गई है, 6 साल में पेंशन मिल जाएगी, ऑल योर लाइफ यू विल गेट पेंशन, एंड हाउ कैन यू मेक, एंड यू आर डूइंग वेल कैरियर वाइज, मतलब कहीं प्रॉब्लम नहीं है, you have the liberty of DGME, future, everything. Why are you doing this? Everybody going all well. Itna tak bhi tha, sir, that, because of the appointments that I did, there was a unwritten rule के, जो दिल्ली में मेस सेक्रेटरी कर लेता है, वो जो पोस्टिंग मांगता है उसको दे देते हैं, बिकॉज he's gone through a hardship. तो ये भी था कि भैया जहां पोस्टिंग चाहिए मिल जाएगी टाइप, which is the big thing. But I had decided, so I told the DGME general officer, मैं बोला सर सिस्टम से कोई फाइट नहीं करना है, आई हैव द लिबर्टी टू कम टू यू, आप हाँ करेंगे तो मैं पेपर पुट अप करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा. So he gave me a chance to rethink, and I said no sir, I'm very sure I don't want the chance. With that I put up my papers, and it was a journey of 4-5 months, and my papers were cleared. I got my premature release, and I moved out on premature retirement and went and joined my late uncle in his business in तो दोस्तों Bombay. का Sir. क्या, मैं ये पूछना चाहता हूँ, दोस्तों का क्या था यार, 14 साल में कौन छोड़ता है यार एक्सेंडी? Sir, everybody was very annoyed. Everybody was saying कि ऐसा डिसीजन कैसे ले सकता है, पेंशन भी नहीं मिल रही है. बोथ NDA कोस्टमेट्स, IMA कोस्टमेट्स, EME के कोस्टमेट्स, सारे कि यार ऐसी चीज क्या होगी कि, एंड कैरियर वाइज वाज डूइंग fairly well. You're doing very well, in fact. Very well, very well. So but I said, यार ये डिसीजन ले लिया, let's see what life has in store. So it was not, I would say, a situation of a decision which was much thought about कि आगे क्या करूंगा, but it was a decision taken, and hence I went with the flow. And in this space, I think my uncle was supportive. He did give me a decent salary because I went as an employee. तो वही एक लाइफ में हाई थी सर, कि अगर आप एक couple of lakhs की सैलरी अगर आपको मिल जाए, तो मतलब इट्स अ बिग थिंग सर. मतलब कभी सोचा ही नहीं था, कभी देखा ही नहीं था. फादर भी आर्मी में थे, तो कि इस टाइप की तनख्वाह भी मिल सकती है. बट दैट हैपेंड, एंड देन it also came with a responsibility, because I didn't know B of business. I was clueless, and I was kind of para-dropped to virtually head an organization. So I was fortunate. You were a founder. You were a founder of this organization. Not with this company, sir. I joined as an employee. It was a journey, but I was from the family side mandated to head a business vertical of energy, and that was with biomass bioenergy. And मेरे अंकल के प्रोजेक्ट्स थे, उनकी कंपनीज थी. बट इट वाज अगेन सर, एज आई वुड से, तारे देखने वाली बात थी सर, बिकॉज आई हैड नॉट स्टडीड बिजनेस. तो एक फौजी माइंडसेट, आप फाइनेंशियल तरीके से सोचते नहीं हो सर, कि हर चीज की प्रॉफिटेबिलिटी नहीं देखते हो. यू लुक एट लाइफ मेंटेनेंस इक्विपमेंट, बट यू डोंट सी कि बॉटम लाइन में प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, ये काम करने से पैसे बनेंगे कि नहीं, एंड द अदर कैविएट्स ऑफ बिजनेस. सो दैट वाज नेवर देयर. Now, for me, it was OJT, sir, on the job training. You are sitting with the promoter, you are sitting with the Malik, but आप चुपचाप बैठे हो, because one way रिसेप्शन है, आप सुन रहे हो, बट आप डिसीजन ले भी नहीं सकते क्योंकि आप प्रमोटर नहीं हो. आप सजेस्टिव रह सकते हो, एंड बाकी जो टीम मेंबर्स हैं, जो लेट्स से कलीग्स हैं, जो दे आर एक्सपर्ट्स इन देयर फील्ड, तो आप उनको क्या बताओगे? क्योंकि और उनका थॉट प्रोसेस, इफ आई एम इन देयर शू, यार ये ऊपर आके बैठ गया फौजी, बात करता है, बट what is he talking about? What does he know? So that is something in the first
1-2 years I had to grapple with, because transition from uniform to corporate, how was the transition family के लिए, आपके लिए? it was very difficult, sir. It was very difficult, sir, because no, family, we had to move out and come to Bombay again. Bombay में आए तो there was no support mechanism which the army gives you, sir. When I say support mechanism, army is gated communities. You would have a camp. Your basic amenities would be taken care of. जब तक आपका घर का चूल्हा नहीं जलेगा, आप मेस से खाना मंगा सकते हो. We have the buddy system, so you would have a buddy who can direct you कि सर आपका बैंक इधर है, आपकी ग्रोसरी इधर है, ये चीज इधर है, ऑफिस इधर है. So you kind of get into the system very fast. It's a known environment. Transition में civil में it's absolutely unknown environment. The only thing which you need to do there is have a lot of money in your pocket, because for everything you'll have to pay. आपको आपके घर में बिजली का कनेक्शन भी ठीक कराना है तो आपको पहले पैसे देने. आदमी बुलाना है तो वो फोन पे आपको बोल देगा सर बुलाने के 500 रुपए, मेरे आने के 500 रुपए. So it's a different thing. Besides that, the challenges of now establishing yourself, understanding business, working. So that phase again was I would say a learning curve and a troublesome phase, because any change is difficult. मतलब कोई भी चेंज आएगा, परिवर्तन आएगा, आपके लिए, फैमिली के लिए, सब डिफिकल्ट है. बट क्योंकि फौजी सेटअप से ही ओरिजिनेशन था सर, कि हर 2 साल में नई जगह देखी, तो यहाँ भी पहुंच गए सर. एंड वन थिंग विच आई ऑलवेज डू सर एज एन इंडिविजुअल, आई लुक एट व्हाट वी कॉल एज WCS सर, वर्स्ट केस सिनेरियो. कि मैंने एग्जाम दिया तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि एग्जाम में फेल हो जाओ. आप एक गेम के मैदान में उतरे तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, गेम हारेंगे, आप हारोगे, कोई जीतेगा. तो जॉब भी आप कर रहे हो, आप काम कर रहे हो, वर्स्ट केस क्या होना कि भाई ये मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मेरी वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, मेरी लाइबिलिटीज है, मेरी वाइफ है, मेरी डॉटर है, मेरे एजेड पेरेंट्स हैं. चलो गॉड इज काइंड, पेरेंट्स की तरफ से कोई लाइबिलिटी नहीं थी फाइनेंशियली. तो अब एकेडमिकली आई एम इंजीनियर, आई एम PG इन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, तो कहीं जाके मैं जॉब अप्लाई करूं तो मिल जाएगा, मुझे जॉब मुझे मिल जाएगा. एंड अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था. मतलब और कुछ नहीं तो मैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाके पढ़ाई लूंगा. मतलब दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज. सो आई लुक्ड एट अ वर्स्ट केस सिनेरियो. आई डिडंट बैंक कि मैं अपनी फैमिली में काम करने जा रहा हूँ. आई वेंट एज एन एम्प्लॉय एंड आई वेंट देयर विद ओपन माइंड कि मुझे परफॉर्म करना है. परफॉर्म करूंगा तो रहूंगा, नहीं तो या तो मैं चले जाऊंगा या कोई मुझे निकाल देगा. और वो परफॉर्म करने का जज्बा जो है वो NDA डेज से, IMA डेज से फौज में है ही है हम सब में, कि यार जो टास्क मिला है भैया उसमें परफॉर्म करना. Absolutely, sir. Absolutely. So in this performance task, it was on the job learning, and it was very difficult. Again, sir, I must give credit to one gentleman, my late uncle, that he had this kind of a belief in allowing me to do what he. It's very difficult to put somebody at the helm of affairs. कि आप देखो, आप decision लो. So hats off to him, and he introduced me to a gentleman by the name of Mr. P.N. Devarajan. Again, God bless his soul, no more sir. Devarajan ji is the doyen of industry in India, sir. He was friend of my uncle, but they both had mutual regard. Again, plus 70 years, both were there, sir. But Devarajan ji was the youngest chairman managing director, HOC, Hindustan Organic Chemicals. I'm just giving you a brief, sir. मतलब illustrates इतने हैं. He was on the board of governors of RBI for 10 years at a stretch when Dr. Manmohan Singh was there. He was chairman Bank of Baroda. He was the group president Reliance. He built the 60 million metric ton Reliance refinery along with Dhirubhai Ambani ji as the group president Reliance. He, as group president SR, built the SR refinery, and so on and so forth. So Devarajan ji became my mentor and I became his mentee. And in this relationship, sir, he used to travel, old man used to travel to Bombay once a month. 2-3 दिन के लिए वो आते थे and केवल conversation होता था. I had the opportunity and he would allocate the time और उनके आमने सामने बैठ के 1.5-2 घंटे की बात होती थी. उसमें बीच में लंच भी खा लिया, चाय कॉफी पी लिया. And
he would only talk and kind of suggest what can be done. He never, you know, as a mentor, he never said aise kar, yeah, do this. Or he would just be suggestive and he would allow me to be able to do whatever I wanted to. So again, courtesy my uncle, these conversations happened for almost 4-5 years. एंड आई वुड गो बैक टू हिम कि मैंने सर ये बिजनेस है, पैसे नहीं है, रेगुलेटरी है, इस स्टेट में ये प्रॉब्लम है, पॉलिटिशियन है, ब्यूरोक्रेट है, एक्स वाई जेड, एंड कैसे, एंड ही वुड गिव लाइफ एग्जांपल्स ऑफ लाइफ एंड हाउ हिज जर्नी, एंड ही वुड से यू नो क्या धीरू भाई अंबानी के पास पैसे थे क्या, or let's say Adani Group, or let's say XYZ, all these, you know, businessmen, did they have money? No, you have, these are things of life to do. We are in a stage today where people are still willing to give you money. In those phases, there was nobody who was willing to do that as well. So in that journey, I think problem statements and the way of handling it, I could do things. And in this phase also, I reached the point where he, as a mentor, gave me advice I must leave my uncle, which was shocking to me. मतलब I said, sir, आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? मैंने said, you know, that's family, इसलिए मैं आया ये. And he, in a true mentor sense, he said, you know, Monish, for you to blossom out, to do things, you have to be independent. And here, you will never be independent. You will always have a system of a protection where while you are taking a decision, but the onus is not yours. The onus is, you know, your uncle and maybe after him, whatever. And hence, for you to be able to actually achieve what you can in life, move out, leave him and go away. And I told him, sir, मैं ये कभी नहीं करूँगा, this will not happen. And we left it at that. And for 1 year post that, I never took such a decision. But, you know, life again brings you to situations. Between me and my uncle, we kind of reached a situation where I said, I need to move out. And as a professional, I moved out. But in this journey, my uncle's group, they had multiple reversals on businesses. And business ki cycle hai, up down hota hai. And hence, there was a severe cash crunch. और इस सिवियर कैश क्रंच में बिजनेस के लिए पैसे नहीं थे सर, यहां तक कि तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं थे. एंड सर, हम फौजी माइंडसेट से आते हैं सिक्योरिटी के कि 1 तारीख को तनख्वाह क्रेडिट हो जाती है, उसमें 30 दिन आपको बिताने, सो यू आर ओके विद इट. नाउ यू आर एट अ सिचुएशन वेयर आपकी तो तनख्वाह छोड़ो, आपके पास एम्प्लॉयज हैं, आप उनकी तनख्वाह भी नहीं दे रहे हो, एंड यू आर एट द हेल्म ऑफ इट. सो इन दिस space, at being the helm of it, it dawned upon me that I have to find the solutions for finding the cash flow for the company that I am running. And I went out to the market. And again, you meet people. I met some investment bankers. I met some financial people. And the business model of Presswell, which is now my company, what I'm doing, entailed that I could maybe raise capital in this company. So I went to my uncle and I said, ऐसे ऐसे है और ये आदमी मिला है, ये बोलता है कि ऐसे इक्विटी कैपिटल रेज कर सकते हैं. तो my uncle asked me, इक्विटी क्या है? I didn't know, sir. And I didn't know about finance. मतलब मुझे पता ही नहीं था. मैं बोला ऐसे ऐसे बोल रहा है, ये मैं करना चाहता हूँ. He said, करो. So with this gentleman in 2012, I started a journey of making my first business plan, making my first financial model on the Excel sheet, and going through market situation of raising capital. And to my utter shock, sir, in 4 or 5 months, I was able to raise capital. I got multiple term sheets, you know, the business model, the storytelling, the new age, you know, valuation structures, etc., all on the job. Quick time, one had to learn, one had to present, or ho gaya, sir. Again, fortunately, you know, blessed by God's blessings. And when the capital raise kind of was becoming finality, it was disbelief for everybody, including my uncle, my family, other employees, कि ये फौजी अकेला निकला और ये कैपिटल ले आया. And how much was the capital you were able to? Sir, that point of time, $2 million, dollar was at 60 rupees, so 12 crores INR. And उसके कुछ conditions थे, sir, in the sense वो capital आने के.
and I was an employee. My uncle was the promoter. So that capital, one of the conditions was for me to be in a ownership role, because and rightfully so. They said, this capital will have to stay for 4, 5, 6 years before it, is returned back. And with uncle's age profile, reality of life, they said we want you to be a partner or be a part of the structure holding. और इस प्रोसेस में मेरे पास जो थोड़े बहुत फौज के पैसे मिले थे सर, पेंशन तो थी नहीं, तो ग्रेचुइटी ये वो मैंने कुछ अपने ब्रदर से बोरो किए, कुछ फादर से बोरो किए, and I participated in this company Prespel, and I put in my own money. So I became a promoter or a owner or a partnership owner by default, by not design. It was never my thought process to become a owner. But since this happened, I became a shareholder. And now what are the obligations of a shareholder? What all that I had to go through. So, legal things, regulatory aspects, company filing, register of companies, ये सारी चीजें भी सीखने को मिली. And in this learning phase and curve, since I became a promoter now, or a co-promoter along with my uncle, which he allowed, that is his magnanimity that he allowed that, yes, okay. So in this journey, when that capital came in, now we had some liquidity available to do work. And, I started building that up. But again, my mindset was employee. My mindset was कि जो uncle बोलेंगे वही करना है. And इसमें capital started dwindling down. And I could see the writing on the wall कि फिर ये पैसे खत्म हो जाएंगे for whatever reasons. And maybe we will be back to a situation couple of years down the line. So that's where the differences of how to utilize that capital started coming in with my uncle. And I said, family के बड़े हैं, ये differences manifest होने से better है कि मैं ही चले जाता हूँ. So I requested my uncle, like a professional, on a 90 days notice, and I said, आप मुझे जाने दीजिए, और ये कंपनी है, ये शेयर होल्डिंग है आपकी है, मतलब आप इसको चला लो. It did not happen. Again, for whatever reasons, I didn't get that money, and by default, I was the largest shareholder, so I became the promoter of the company. And my uncle became the silent partner, and along with this investor, now I was on my own. So what P.N. Devarajan ji wanted me to do, he suggested, I said no, actually it happened. Again, no planning around it, no structure around it. But I was at a situation in 2015-16 where I had about 30 employees. I had 2 months of salary to pay, sir. I didn't have money in the bank, and I didn't have an office to sit in क्योंकि मैंने अंकल का ऑफिस और वो स्ट्रक्चर छोड़ दिया था. और ये 25 और जो एम्प्लॉइज थे ये भी मेरे साथ आ गए. तो मैंने एक दिन सबको बुलाया और मैंने बोला, देखो ऐसा है, पैसे नहीं आपकी तनख्वाह देने के लिए, तो जिसको जाना है जा सकते हैं. एंड जब पैसे होंगे आपके जो 2 महीने की तनख्वाह बकाया है मैं दे दूंगा. एक चीज मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं खुद पैसे लेने से पहले आपको दूंगा, फिर मैं लूंगा. मेरी भी 2 महीने की तनख्वाह बकाया एज एन एम्प्लॉय, तो आपके भी ऑब्लिगेशन है, मेरी ऑब्लिगेशन. So these guys said, नहीं सर हम काम करेंगे, we'll all work together and stuff. So we started off as a complete scratch slate, sir. And that's where actually for me the true entrepreneurial journey started. Until then, it was entrepreneurship under guidance, and the onus of failure was not on me, sir. But after that, the onus of failure. You are now yes, the sir. captain. Now you're captain of the ship. So the buck stops at me. So the onus of success or failure is now to me. And in that, sir, again, looked at things differently, went back to the drawing board, created this Prespel as a structure, and I did everything possible, sir, in the sense, going and pleading for contracts, going to clients, going to government, going to ministries. Jitne joote घिस सकते हैं मैंने घिस लिए, sir. In the sense, it doesn't happen that a structure and a name becomes without doing the hard work. So went through that journey, sir, and we have been consistent in our progression as a company. Our business today, we are market leaders in what we do. It's one of the niche
renewable energy. So we work in the biomass bioenergy segment, sir. We work with farming community. So the adage of Jai Jawan, Jai Kisan, Jai Vigyan fits to us to the T. And our work started getting noticed Now, within India. What is the structure now? कितने employees हैं आपके पास? Sir, we have 250 plus full-time employees, direct employment. Indirect में must be more than 1,000 more who are associated with us. We today work out of 16, 17 states across India. We work in Africa as well, sir. We have started there. We are looking at the Southeast Asia market. Besides that first round of capital, which I did in 2013, we did multiple more rounds of capital, sir. So we have capital from State Bank of India NEEP fund, which is a G2G fund. So government of UK and government of India participation. We have Shell, the oil and gas major, as equity investor. We have Mitsui & Co, the Japanese, as equity investor. We have US government. What is the net worth? What is the net worth of Monish Ahuja, if I want to tell? And don't be modest. No, sir. So, it's a very difficult question, sir, because and net worth, when I sign or my CA signs and gives a statement, is at about 4.5 crores, sir. And I look at myself and I say, यार चला 25 साल से काम कर रहा और केवल 4 crore मेरी net worth है, because that's what the CA signs. But in the new age business, the shares that I have or the the value that the share. I'm asking not your net worth. I'm asking of Punjab Renewable Energy Systems Private Limited. So, sir, we are as a company in a net worth closer to the 1,000 crore mark today, sir. And we should be. This is what I wanted to know. From an ex-NDA, you've reached 1,000 crore net worth company, which you're running on your own. This is really, and yes, you've won so many awards. आपने इतने award, you have been given so many awards. Yes, sir. So we are award winners across our journey, sir, because of the sustainable model of business that we do. Awarded within India, internationally. We are Mission Innovation Champion, which is 30 countries of a sustainable business model, which the countries would adopt. So this was announced in Vancouver in Canada. We were not aware of it, sir. So it was Government of India which put our business model over there, Department of Science and Technology and MNRE. We are the Earth Care Award, sir. We are UNDP Award winners. So multiple awards, company-wise and personally as well. But I think, yes, but I think this is all to the credit of the business model, the team. The award winner is just a recipient on behalf of multiple of the team members. So I think from that perspective, yes. ये बड़ी कमाल की बात है, Monish. Your journey is so inspiring, and this is just the start. मुझे लग रहा है you are so young. This is just the start. This is you have miles to go. Sir, we continue to work, sir. So at 48, if you call me young, yes, I take that as a compliment. Because at 60, I feel young, yeah. Hanji, so I think yes, sir. Again, miles to go in terms of business work. We do multiple more things. We continue to innovate. We continue to bring technology intervention, financial modeling, business growth, and until now we were still cautious in our capital raise. I think now we are in the market where we are much more aggressive because we feel we are now poised for the higher level of growth. And yes, the government, the policies, the structure, the sustainable energy, renewable energy, all have played a part. So I think we are at the right place at the right time, at the right scale for the next large, vertical takeoff growth kind of a situation. So we would definitely capitalize on this situation that we are. ये तो अपने you hire a lot of फौजीज, फौजियों को भी आप hire करते काफी? हाँ जी sir, across the length and breadth of the company, lot of फौजीज are there, sir. I think officer, JCO, जवान सब category में. And sir, without exception, there is no. It's not that एक जवान या JCO है तो वो organization lead नहीं कर सकता है. Again, without giving a name, sir. One of the EME, NCOs, he joined me in my journey 2013-14 mein, stuck with me for 8 years. Today, he heads a vertical in Reliance. He's the business head and draws a fat salary, and there are many officers who work under it.
So it's not, and मेरे पास एक टाइम पे आया था सर, 4-5 साल पहले, that saying सर कि मेरी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, और मैं मतलब हाउ डू आई गो फॉर अ मीटिंग, और वहाँ सीईओ बैठता है, ये बैठता है। मैं बोला यार, एक जापानीज हमारे पास आता है, एक यूरोपियन हमारे पास आता है, तो उसकी हिंदी में प्रॉब्लम है, उसकी इंग्लिश में प्रॉब्लम है, तो वो एक ट्रांसलेटर लेके आता है ना, तो तू ये 2 MBA बच्चे हायर कर ले जो तेरे लिए तेरी हिंदी को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। बट business is not about language. Yeah. Business is about your acumen to, deliver, about your acumen to negotiate, to place things in a perspective. So, get that growth space. So, immaterial of what you were, let's say, in your army career or your past life. Here, it is about finding the right person for the right job. So that's one. And yes, sir, we have a lot of officers from Army, Navy, Air Force. We have JCOs and PBORs in various verticals. Very nice. We also, coincidentally, sir, until recently, we were 5 squadron course-mates together in the company, sir. Great. One of them has recently moved out and, again, going to do his own thing. But we are still 4 NDA squadron course-mates out of 16 who are still in Pressville. And hopefully many more in the journey would join us. Great, Munish. लास्ट में मैं बस यही पूछना चाहता हूँ, आपकी क्या एडवाइस है यंग जनरेशन के जो मुझे फॉलो करते हैं, दे आर यू कैन से 16 साल से 22-23 साल के लड़के लड़कियां, उनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहोगे जो ऑफिसर बनना चाहते हैं, लाइफ में सक्सीड करना चाहते हैं? व्हाट वुड बी, क्या मतलब अपनी जिंदगी से क्या देना चाहोगे? So 2 things, sir. One, I would say that aim high, aim for the sky, and be realistic about it. It's not that this is just dreams. You can live your dreams. Life is there which allows you to live your dreams. Second is, there is no substitute to hard work. तो आपको वो करना ही पड़ेगा, और उसमें you will have to take your family, friends along with you. Again, सबके पास वही 24 घंटे हैं, तो आपको अपने काम के लिए भी समय निकालना पड़ेगा, for your family also, for your friends also. So सारी चीजें करना जरूरी है. And hence, it is about time management. And third is, there is no need to, fear failure. Every step failure is going to happen. But that failure should be, something which should kind of give you care. Isko main aur kis tarike se kar sakta hu? How can I look at it maybe differently? So patience and perseverance in the field that you choose. And suppose you choose a field और आपको उसमें मजा नहीं आ रहा है, आप छोड़ दो उसको. You do something else. You will find your calling. So for whatever reason, as long as I served in the army, I did well in it. But when I decided to move out, today I don't cry about कि यार मैं फौज में होता तो आज ब्रिगेडियर होता. अगर होता तो शायद होता. But you're doing something else, right? So you always be happy with what you are doing. Don't be unhappy about what somebody else is doing. उसकी चिंता मत करो, आप जिसमें खुश हो. So the young, boys 16, 17, 18, boys and girls, I would tell them that take as many risks as you can. जितना आप wild सोच सकते हो, बड़ा सोच सकते हो, सोचो, because nothing is stopping you to think that. As you keep growing in age, life, you will stop doing that. You will start becoming more risk averse. आप गलती करने से डरना शुरू करोगे, तो वो डर नहीं होना चाहिए. गलती करो and make the mistake and be conscious कि ये गलती हुई तो ये मेरी learning हुई, इसको इस तरीके से ठीक करना. So, sir, I keep telling all my, subordinates, employees, colleagues, I said, यार, गलती हो जाए, business में loss हो जाए, intentional ना हो, कोई problem नहीं. Every mistake can get rectified. So don't make an intentional mistake. Right. But if you don't make mistakes, you will never learn. And always work from hope of success rather than fear of failure. Absolutely, sir. Absolutely. And I think, sir, if you start looking at fear of failure, you won't climb the heights of Kargil, and say that I'm going there because I'm going to die. You go there because you want to succeed, right? Death happens. You're doing something. So work happens. So you're not doing anything with the view that yaar main fail hone wala. But it's not that you're doing something and you're going to find success. Nahi hoga. So as I said, sir, it's relative. I might be thinking that my company today, instead of 1,000 crores, should have been 10,000 crores. So I can't cry over that. I should be happy that
10 साल में 1000 की तो होगी. So I think that's how we look at it, sir. I was seeing your website and your company and your awards and all. Very, very proud that you wore the same uniform as me. We belong to the great Indian Army, and it's because Army उसने हमें सब सिखाया कि आज हम ये सब कर पाए. मनीष, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगा, और मैं यही उम्मीद करता हूँ कि you'll keep progressing now. We will keep following your company, and inshallah someday come and visit your company and speak to your employees about and learn about your journey. Fantastic. Thank you so much, sir. Thank you so much for inviting me. I think your fan following is humongous, and if people can, get business ideas, work ideas, get motivated to join the army, do service to the nation, I think it is fantastic, sir. You have the flag behind you, sir. I always wear the flag on my collar. I think we all do things in the right perspective. हमारे ethos वही है. Yes, sir. बिल्कुल सर, जैसा आपने बोला, same uniform, same caste, color, creed, we follow the same ethos of India first. And truly, sir, thanks so much for giving me this opportunity. And Jai Hind, that's how we all Thank you, want Manish. India to be one. Yeah, thank you very much. And once we premiere it, I'll let you know when it is ready. Thank you very much. This was really, I think I can keep talking to you on that entrepreneurial part of your journey, but I think वो किसी और दिन over a drink we will talk on that. Last week I had the unique opportunity to present to the Prime Minister's office. मुझे बुलाया गया. मैं जो मतलब business model है India के perspective से, I got a chance to present it to the Prime Minister's office. Again, it's a big high in life, sir. I got contacted. I was called. मैंने presentation दिया 1.5 घंटे का. The Prime Minister's office is listening to what we are doing. So I think can't get better than what it is, sir. Absolutely. So miles to go for you, and all the best to you and your entire family and your company. And we are very proud of you. Thank you, Manish. Thank you so much, sir. Jai Hind. Thank you.